Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter number 14, normal distribution was under discussion. Today, lecture number 2, and the topic which I am going to discuss, properties of the normal distributions. Dear students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Now, let's start a topic, properties of the normal distribution. Today's contents of the lecture is only based on the properties of normal distribution. Now, I am going to discuss the properties of the normal distributions. The first property of the normal distribution is the normal distribution is bell-shaped, unimodal and symmetrical distribution. In the second property, the normal function has a positive value for every value of x. The normal curve, therefore lies entirely above the x-axis. It becomes parallel to x-axis but not touch the x-axis. And the normal curve has always gained positive value for each value of for every value of x. In the third property, the normal function is a PDF probability density function, that is also write P dot D dot F PDF, that is function of x is greater than or equal to 0 and the total area under the normal curve is unity. Function of x yani normal function students 1 over sigma under 2 pi e की power half into x minus mu over sigma whole square. दिस इज द नॉर्मल फंक्शन और ये अपनी पूरी लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फिर अगर इसको हम लोग सम कर लें इंटीग्रेट कर लें तो इसका आंसर विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1 सो वी कॉल्ड इट दैट फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ फंक्शन जो फंक्शन अपनी पूरी लिमिट पे इक्वल टू 1 है उसको हम लोग जो है कह सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ. In the fourth property, the mean, mu and standard deviation sigma are the parameters of the normal distribution. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आपकी पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होती है. अगर आप उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज को मालूम कर लें तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा आर द टू पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. The fifth property of the normal distribution is as the normal distribution is symmetrical, its mean, median and mode are coincide are equal to mu. Due to symmetrical distributions, the value of the mean, mu lie at the middle of the normal curve and median and mode are also a type of averages, so they are also equal to mu. In the sixth number, the mean deviation of the normal distribution is 0.7979 of its standard deviation. Mean deviation is equal to 0.7979 sigma. Sigma is the standard deviation of the normal curve. तो आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है mean deviation की value which is equal to 0.7979 sigma, which is also right as 4 by 5 of sigma. In the seventh number, the quartile deviation of the normal distribution is 0.6745 of its standard deviation. Q dot D denoted by quartile deviation 0.6745 of sigma. It is also right as 3 by 5 of sigma. In the eighth number, the first and the third quartiles of the normal distributions are Q1 equal to mu minus 0.6745 of sigma and Q3 equal to mu plus 0.6745 of sigma. तो स्टूडेंट्स आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन डेविएशन जो है वो बराबर होगा 0.7979 सिग्मा. क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू 0.6745 ऑफ सिग्मा एंड Q1 एंड Q3 आर लाई टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द मीन म्यू. Q1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है म्यू माइनस 0.6745 ऑफ सिग्मा एंड Q3 इज mu plus 0.6745 of sigma. That is the eighth property of the normal distribution. In the ninth number, the maximum of normal curve or function is at x equal to mu and the value of the maximum ordinate of normal function is 1 over sigma under root 2 pi. तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस का जो मैक्सिमम होगा फंक्शन when x equal to mu, तो यहाँ पे आपके पास जो है इस नॉर्मल कर्व का फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा when the value of x equal to mu और इसकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 over sigma under root 2 pi. इसको हम लोगों ने ड्राइव किया है यूजिंग नॉर्मल कर्व नॉर्मल फंक्शन. In the 10th number, in a normal distribution, the
following limits contains values are as, अगर आपके पास एक x वैल्यूज का डेटा है और उसमें उसका x वैल्यूज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन म्यू एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास फर्स्ट जो लिमिट है म्यू 1 सिग्मा लिमिट्स म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा लिमिट्स contains or cover data 68.27% of the observations covers with these limits. तो इन लिमिट्स में आपके पास यहाँ पे जो डेटा कवर होगा म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के मिडल में which is 68.27%. I show with blue text, and in the green text mu plus minus 2 sigma, these are the 2 sigma limits, and that covers the data 95% of 95.45% of the observations, और टोटल डेटा सेट की 95% ऑब्जर्वेशंस जो है वो कवर होंगी विद दीज टू लिमिट्स म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, और आई राइट शो इन ग्रीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, और लास्ट म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट्स आर कवर्स 99.73% data, approximately 100% data covers in with these two limits plus minus 3 sigma. 3 सिग्मा लिमिट्स पे आपका कंप्लीट डाटा जो है वो कवर हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे approximately 99.73% data, that is the exact figure of the normal distribution. तो ये आपके पास 99.73% डाटा कवर हो जाएगा with these two limits, और 1 सिग्मा लिमिट्स पे डाटा कवर होगा 68.27%, 2 सिग्मा लिमिट्स पे डाटा कवर होगा 95.45%, और 3 सिग्मा लिमिट्स पे आपके पास डाटा कवर हो जाएगा 99.73%. These are the exact limits or these are the exact परसेंटेजेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो कोई भी डेटा अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो वो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपके पास जो है होल्ड कर रहा होगा, और वो इस तरह के जो अगर आप लोग लिमिट्स जनरेट करते हैं उस डेटा सेट के ऊपर, तो यहाँ पे इतने परसेंट डेटा जो है वो आपके पास कवर हो जाएगा अगर आप उसको प्रैक्टिकली जो है इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं. In the 11th property of the normal distributions, there are the 2 points of inflections of the normal curve lie at mu minus sigma and mu plus sigma, where the curve change its directions. Both point of inflections lie with the 1 sigma limits. One point lie at the left of the mean mu minus sigma, and one point lie to the right of the mean mu plus sigma. In the 12th property, all odd order moments about mean of the normal distribution are 0, mu1 equal to mu3 equal to 0. Odd order moments of the normal distributions are equal to 0. The second moment and fourth moment about means are, second moment is always equal to variance sigma square, and the fourth moment is equal to 3 mu2. Second moment about mean का square use करेंगे, और second moment about mean is always equal to sigma square 3 sigma square power square and 3 sigma power 4. You can write as 3 sigma power 4. So second moment is always equal to variance, and third fourth moment is 3 times of the sigma power 4. So there are these are the two properties in 11th number and 12th number of the normal distribution. In the last property of the normal distributions, the moment's coefficient of skewness of the normal distribution is always equal to 0. We have the formula beta 1 equal to mu3 square over mu2 ka cube, or here the third moment about mean is always equal to 0 of the normal distribution, so the value of the beta 1 equal to 0. It means that there is no skewness in normal distribution. Normal distribution is a bell-shaped and unimodal symmetrical distributions, and the moments coefficient of kurtosis is mesokurtic. इसमें हमारे पास जो टाइप होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की इज mesokurtic और नॉर्मल टाइप, और बीटा 2 is equal to mu4 over mu2 square, और mu4 is as equal to 3 mu2 square, and डिनोमिनेटर में mu2 का स्क्वायर दोनों को कैंसिल कर दें तो आंसर इज 3. सो वैल्यू ऑफ बीटा 2 इक्वल टू 3. इट मीन्स डैट के आपके पास जो भी कर्व है डेट इज द मेसोकर्टिक और नॉर्मल. तो आपके पास यहाँ पे 13 प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो आपके पास नो स्क्यूनेस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल कर्व इज अ मेसोकर्टिक टाइप. In this lecture, properties of the normal distributions are discussed one by one, and there are the 13 properties of the normal distributions. इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.